Hello students, today this is my second video on the chapter acid, bases and salt. आज मैं आप लोगों से दो चीजों के बारे में बात करूंगा. One is the classification of the acids and second thing is the indicators. Right? We will discuss about weak acids, strong acids, concentrated acids and dilute acids. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू वीक एसिड्स. मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि इफ वी डिसॉल्व एन एसिड इनटू द वाटर इट गिव्स H ion concentration. That means that water is ionized. Yes, that is ionized. Now if we dissolve any acid into water and it do not completely ionized, अगर वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है तो that means that is weak acid. All the organic acid such as malic acid, acetic acid, citric acid, etc. all they are edible and they are actually weak acid. I have written one example over here, that is acetic acid. Now come to the strong acids. Those acids which ionize completely into the water and give the higher concentration of H positive ions. That is known as strong acid. All the mineral acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are strong acids. Now coming to the another point, that is the concentrated acids. This means we are dissolving acids into water. If there are no water molecules in it or less water molecules, that means the volume of acid is more and the volume of water is less. That is known as concentrated acid. Coming to the dilute acid. Now, if an acid contains more number of water molecules than its quantity, this means अब acid कम है और पानी water ज़्यादा है. Quantity of water is more. That become dilute acid. So, coming to the next topic, next is the indicators. Indicators are those substances by which we can check that it is a base or an acid. So, these indicators are categorized into four categories: natural indicators, synthetic indicators, olfactory indicators and universal indicators. बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की. आई एम राइटिंग हियर द टू इंडिकेटर लिटमस एंड टर्मरिक. दिस इज लिटमस एंड टर्मरिक. लिटमस इज एक्चुअली द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ प्लांट known as lichen. The original color of this extract is purple. That is applied on a paper strips and we made the two color paper strips. One is red litmus paper and blue litmus paper. When the blue litmus paper changes to red, that means the provided medium to us was acidic medium. When the red litmus paper turns into the blue, that means the provided medium is base. यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये ब्लू रेड में टर्न होता है, ये एसिडिक मीडियम है, तो HCl में ऐसा होगा. अगर रेड लिटमस चेंज होता है ब्लू में एंड दैट शो द बेसिक मीडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा होगा. राइट? बट कमिंग टू द टर्मरिक, यस, मैं बात कर रहा हूं आपसे हल्दी की, जो हमारे घरों में मिलती है. एंड यू हैव सीन सेवरल टाइम्स दैट कि अगर कहीं सब्जी लग जाती है, दैट इज अ टर्मरिक पैच, हल्दी का पैच लग जाता है,
and we apply a soap on it, हम उस पर साबुन अगर रगड़ दें तो that patch becomes reddish brown in color. That means that soap is what? That is base. वो टर्मरिक के साथ रिएक्शन करता है and the color get change. That means ये सजेस्ट करता है कि वो एसिड से कोई चेंज नहीं करेगा. So turmeric becomes reddish in base and it shows no change in acids, right? Now coming to the synthetic indicators. Synthetic indicators are found in our laboratory. There are two, methyl orange and phenolphthalein. We use these two indicators while testing acids and base. And of course, जब हम acids को टेस्ट करते हैं तो that may be done very carefully because they are corrosive in nature. Methyl orange becomes red in color in acidic medium and yellowish in basic medium. Phenolphthalein shows pink color in basic medium but remains colorless in acidic medium. Now coming to the olfactory indicators. यहां मैं बात कर रहा हूं स्मेल की. बहुत सारी चीजों की स्मेल चेंज हो जाती है इन द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम. मैंने यहां 3 लिखे हैं. वन इज अनियन, वेनिला एंड क्लोव. अनियन एक्सट्रैक्ट का स्मेल सबको मालूम है कैसा होता है, ठीक है, एवरीवन नोज दैट. बट when you add acid to it, it changes. It gives a specific smell in acidic medium. Vanilla extract, when we add acids to them, they also give a different odor. That means you can clearly judge now the smell is being changed in the acidic medium. Clove give different odor in different mediums. That means अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उसका ऑर्डर कुछ और होगा और अगर बेसिक मीडियम होगा तो उसका ऑर्डर कुछ और होगा, राइट? नाउ ऑन द लास्ट वी कम टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर. मैंने एक वर्ड भी यूज किया, दैट इज अ पीएच पेपर. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स एंड अप्लाइड ऑन अ पेपर स्ट्रिप. मैं आपको अपनी वीडियो में नेक्स्ट में ये बताऊंगा भी कि what exactly is the pH value. In pH strips, there are the near about 14 colors by which we can judge that how strong is the acid and how strong is the base and what exactly is the neutral which doesn't show any acidic property or any basic property, right? उसमें कलर्स होते हैं from light pink to dark pink and from light greenish blue to somewhere up to dark blue in color. अगर हम लोग टेस्ट करते हैं सपोज HCl को, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे ही उसे पीएच पेपर से टेस्ट करेंगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है दैट विल गिव अ डार्क पिंक कलर, राइट? और अगर हम टेस्ट करेंगे NaOH या KOH को जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं, उनका कलर कैसा आएगा? दैट इज डार्क ब्लूइश कलर. सो दैट इज द pH paper and known as the pH indicator. So this was my today's topic about indicators and the classification of the acids and bases. Hope you all have understood well to it. Now in my next video I will talk about the chemical properties of acids. Thank you very much.